Hello to all my viewers. So now let's look at question number 9 of exercise 9.1. Question says that the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं चिल्ड्रन, बिल्डिंग एंड टावर. तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. वेराज जब हम बिल्डिंग के फुट से टावर की टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. आपको टावर की हाइट गिवन है, हाई मीन्स हाइट ऑफ टावर इज गिवन एज 50 मीटर. सो पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? ऑलराइट, सो नाउ लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. See children, this is the ground level. Okay. Here is the tower. Let's say AB. This is tower. And height, how much? 50 meter height is given. Okay. AB is a tower of height 50 meter. And this is suppose building CD. CD is a building. आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है. लेट्स से हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग. ओके, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, दिस इज द टावर, सो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ओके, यहां तक आपको एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, राइट. एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर, हियर यहां आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच? 60 डिग्री. दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, राइट. सो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. सो व्हाट इज गिवन हियर? ये आपका राइट एंगल है स्ट्रेट, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट. सो हियर देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, वन इज ABD, दिस वन ABD, एंड अनदर इज CDB. आपको गिवन है परपेंडिकुलर एंड बेस के साथ आप रिलेशन ले लेंगे, परपेंडिकुलर एंड बेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डाउन द डिनोशंस. लेट व्हाट इज AB? AB इज हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर. दिस इज गिवन एज 50 मीटर. ओके, देन CD is height of building. Let's assume it to be h meter. Okay, now we'll consider the right angle triangle. So first of all, in right triangle, this one BDC. In right triangle BDC. So children, in BDC we have to find out height and we'll take the relation between perpendicular. In right angle triangle, this perpendicular and base. So relation between perpendicular and base. By now you must know what is the relation between perpendicular and base, and you can use this Pandit Badri Prasad Har Har Bole, right? So this is sine, cos, tan. Okay, so यहाँ पे perpendicular and base, तो कौन सा fulfill कर रहा है आपका relation? Tan, right? Tan is perpendicular by base. So we'll apply the formula of tan here. Tan and angle is how much? 30 degree. So tan 30 degree is equals to perpendicular. Perpendicular is CD upon base. Base is BD. Right? Now tan 30. Tan 30 formula is 1 by root 3. Okay? Equals to CD. What is CD here? CD हमने h assume किया है. Upon BD is also unknown. Do the cross multiplication. So BD into 1 is BD equals to h into root 3 is h root 3. Now this can't be simplified further. So keep this as equation number 1. Fine. Now also in another right triangle,
इन राइट ट्राइंगल, अब हम ये ट्राइंगल लेंगे चिल्ड्रन बड़ा वाला ABD, इन राइट ट्राइंगल ABD. So what is angle of elevation here in ABD? It is 60 degree, right? And this perpendicular is given and we will use base. So perpendicular and base, that means again tan formula. So tan, angle of elevation this time is 60 degree. And in triangle ABD, what is perpendicular? Perpendicular is AB. And what is base? Base is BD. Okay. Now substitute the values. Tan 60 is under root 3 equals to AB. Height AB is given, that is 50 meter upon BD. See children, we can put value of BD from equation number 1, that is H root 3 here. Okay, you can write here using equation number 1. Alright, now since we have to find the value of H, height of building, so we can simply do the cross multiplication. That means root 3 multiplied by H root 3 equals to 50. And two roots with in multiplication, so root 3 into root 3 becomes 3H. Right? Root 3 को जब आप root 3 से multiply करेंगे क्या हो जाएगा? Root cancel हो जाएगा, 3 will remain. So 3H equals to 50. Implies H की value कितनी आ गई children? 50 upon 3. Okay. So 50 upon 3 is approximately 16.7 meter approx. Fine. So this is what we have to find, height of building. So you can write hence the height of building is 16.7 meter approx. I hope this question is clear to everyone. Okay. Now moving on to next question, question number 10. So children, in question number 10, question says that two poles of equal heights are standing opposite each other. दो poles हैं जिनकी heights equal है, दोनों की height क्या है? Equal, are standing opposite each other on either side of the road. रोड के एक दोनों साइड में खड़े हैं, मतलब एक वन साइड में, एक उसके ऑपोजिट साइड में है अदर पोल. सो दोनों की हाइट सेम है. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड एंड रोड इज 80 मीटर वाइड. width of road is given. Okay, from a point between them on the road. रोड के बीच में एक पॉइंट है, observation point. So from a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. तो जो मिडल में जो पॉइंट है, जो रोड के बीच में जो पॉइंट है, उससे दोनों के पोल्स के टॉप पर देखा. सो एक पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड इन अनदर वन इट इज 30 degree. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. आपको height of the pole find out करनी है और जो point of observation था उसका दोनों पोल से कितना distance है, right? दोनों के distance find out करने हैं, distances of point plus आपको height of the pole भी find out करनी है. Okay, so now first of all we'll draw the figure and then we'll do the calculation part. Okay children. So question number 10. So this is road. Two poles of equal heights are standing on either side. One is this pole and another is this one. These two poles are of equal height. Suppose this is AB and this is CD. AB and CD are two equal poles. Height हमें unknown है. Let's suppose AB is H meter. That means obviously CD will also be of H meter because both poles are of equal height. Okay. Now they are standing on either side of the road. Road is 80 meter wide. This road, BD road, is how much? 80 meter wide. Width of road is given. Okay. Now from a point between them on the road, कोई पॉइंट है जो बीच में है कहीं. सपोज दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट.
ओके, इस पॉइंट से आपने दोनों पोल्स के टॉप पर देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन, राइट। आपने इस पॉइंट से फर्स्ट ऑफ ऑल ए यहाँ पे देखा टॉप पर, एंड फ्रॉम द सेम ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपने यहाँ पे टॉप पर सी को ऑब्जर्व किया। ओके, सो यहाँ से आपको क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन एज 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। तो सपोज दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, दीज आर राइट एंगल्स, तो यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री। सो फर्स्टली आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स एच सी डी एंड ए बी, ठीक है। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, प्लस आपको इस पॉइंट से इन दोनों पोल्स का डिस्टेंस, दिस वन राइट एंड दिस वन ऑल्सो। सपोज इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का नाम है ई, राइट। सो डी ई लेंथ भी फाइंड आउट करनी है अलॉन्ग विथ बी ई लेंथ ऑल्सो। नाउ सपोज ये आपको टोटल कितना गिवन है, टोटल इज 80 मीटर वाइड। सपोज चिल्ड्रन दिस डी ई लेंथ इज x मीटर, इसको आपने x मान लिया। सो इफ डी ई इज x एंड टोटल इज 80 मीटर वाइड, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई बी? टोटल 80 में से आप x को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स ई बी कितना हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर, राइट। भाई आपको टोटल लेंथ कितना गिवन है, डी बी कंप्लीट इज 80 मीटर एंड दिस डी ई हमने मान लिया x मीटर है, बिकॉज आपको डी ई एंड बी ई की सेपरेट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो इफ सपोज डी ई इज x मीटर एंड वी नो द होल लेंथ दैट इज 80 मीटर, सो हाउ मच इज बी ई, कंप्लीट 80 में से x को माइनस कर दिया, दैट मीन्स 80 माइनस x मीटर। सो नाउ वी आर क्लियर कि फाइंड आउट क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x आ जाएगा तो सिंपली आपके पास 80 माइनस x हो जाएगा एंड h की वैल्यू। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट द डिनोशंस, हमने क्या एज्यूम किया हुआ है। सो लेट ए बी इक्वल्स टू सी डी, दीज आर हाइट ऑफ टू इक्वल पोल्स। ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू हाइट ऑफ टू इक्वल पोल्स। और हाइट क्या एज्यूम किया आपने, h मीटर, राइट। देन व्हाट एल्स इज गिवन, BD, BD इज width of road, width of road, that is given as 80 मीटर। ओके, DE आपने x एज्यूम किया, आपने फिगर में लिख दिया, DE इज x एंड BE इज हाउ मच, 80 माइनस x। नाउ we'll consider our triangles. Okay children, first of all we'll consider this triangle CDE. So write down, in right triangle CDE. तो CDE में आपके पास this is perpendicular and this is base, that is relation between perpendicular and base. So Pandit Badri Prasad har har bole. So this is sine, cos and tan. So which trigonometric ratio fulfills the relation between perpendicular and base? Perpendicular and base को कौन follow कर रहा है? Obviously tan. Okay. So in right triangle CDE we'll apply the formula of tan. And angle is how much? 30 degree. So tan 30 degree equals to, what is perpendicular? It is CD upon base is DE. Fine. Now put the values. Tan 30 is how much? 1 by root 3. CD is H upon DE क्या assume किया है children? X. So यहाँ से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x into 1 is x, we'll do the cross multiplication. Okay, so x into 1 is x is equals to h into root 3. Okay. So children अगर हम यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, h is equals to x upon root 3. इस root 3 को आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे. So h equals to x upon root 3. Okay, consider this as equation number 1. Now in right triangle, which one is other right triangle? ABE. So in right triangle ABE, again angle is 60 degree
and opposite of this angle, that means this AB is perpendicular and this is base. So perpendicular by base, that means again we'll apply formula of tan. So we'll write tan, and this time angle of elevation is 60 degrees. So tan 60 degree equals to perpendicular AB upon base. Base is BE. Okay, now put the values. Tan 60 is √3. AB assume किया हमने h upon BE. What is BE children? 80 minus x. BE is 80 minus x. Do the cross multiplication. So ये कितना हो गया children? √3 into 80 minus x equals to h. Okay. So here we are observing that two unknown values are there, x as well as h. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. सो we'll substitute the value of h. So √3 into 80 minus x equals to h की जगह आपने क्या पुट किया, x upon √3. कहाँ से? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. यूजिंग इक्वेशन 1. नाउ सॉल्व इट. अब चिल्ड्रन जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 की, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 विल मल्टीप्लाई विद दिस 3. सो √3 into √3, दिस बिकम्स 3 into 80 minus x equals to x. Right? Solve it. 3 into 80 is 240 minus 3 into x, that is 3x equals to x. Take this x terms to one side. So 240 is equals to x plus 3x. This minus 3x will be shifted to right hand side. So now solve it. 240 is equals to x plus 3x is 4x. Find the value of x is equals to 240 divided by 4. ये 4 denominator में आ जाएगा. Right? Now cancel it out. 4 1s are 4. 4 6 are 24. And a 0. So x is equals to कितना आ गया children? 60. x is equals to 60 meter. अब x की वैल्यू आ गई है आपकी. What was x? x is the this वाला distance from one end of that pole to that point. तो x की वैल्यू, that means DE आ गया आपके पास, x 60 meter. So if DE is 60 meter, how much is EB? EB is 80 minus x. That means 80 minus 60. 80 minus 60, so कितना हो गया? 80 minus 60 is 20 meter. तो x का हो गया. Now what about h? Now we can easily find the value of h by substituting this x equals to 60 here in equation number 1. हमारे पास जो x की वैल्यू आई है 60 मीटर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड देन हमारे पास हाइट भी आ जाएगी. सो राइट डाउन, सब्सटीट्यूट x equals to 60 in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट किया. तो इक्वेशन 1 क्या थी चिल्ड्रन? h इक्वल टू x अपॉन √3. दैट मीन्स h इक्वल्स टू x is 60 अपॉन √3. And you very well know whenever there is root term in denominator, now you will rationalize it. So multiply √3 upon √3. सेम नंबर से आपने रूट टर्म से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड करना है. सो सॉल्व इट चिल्ड्रन. तो आ जाएगा 60 √3 अपॉन √3 into 3 is 3. Okay. So now we can cancel it. 3 1s are 3 and 3 2s are 6 and 0. That is 20 √3 meter. Okay. So ये आपके पास हाइट आ गया. हाइट ऑफ दैट पोल्स, two equal heights of poles are 20 √3 and the distance. So now we'll write the hence line. Okay children, so write down hence. Height of pole is 20 √3 meter. Height of pole कितनी आई आपके पास? 20 √3 meter. And the distance of point from poles are
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स आर कितना हो चिल्ड्रन, ये डिस्टेंस इस पॉइंट का, दैट मीन्स ई पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पोल्स. फर्स्ट वन था x, दैट मीन्स x की वैल्यू 60 मीटर, 60 मीटर एंड 80 minus 60, that is 20 meters. So 60 meter and 20 meter respectively. So from poles are 60 meter and another was 80 minus x, that is 80 minus 60, that is 20 meter respectively. So 60 meter and 20 meter, and this is the height of pole, right? So this is it children, this was your question number 10. Keep practicing such type of questions so that you'll feel confident. Okay, so all right children, now we look the other questions in our next video. Thank you, keep studying.